हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। इसमें हम 100 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उनको जानना इतना ज़रूरी क्यों है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, बट आपको पता ही नहीं है कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेबिटर क्या होते हैं, तो आप शायद अच्छी तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट को ना समझ पाओ। Like, you might run the business, but you may not be able to know what actually all these terms convey or they are trying to explain. So that's the reason basic accounting terms काफी important है और we should know it, right? So इस वीडियो में हम बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो में बिफोर मूविंग अहेड about the basic accounting terms, we should know what do we understand by the accounting terms. So accounting terms are words and phrases that are commonly used in accounting and finances to describe financial transactions, statements and the reports. So accounting terms क्या होते हैं, like if you will take any balance sheet of any company, you will find all these basic accounting terms. In the balance sheet, you can see what are the assets, like furniture will be written there, or maybe cash will be written there, or maybe bank balance will be written there. There will be a lot of accounting terms that you can see in the balance sheet of any company. Not only in balance sheet, like if you will take the profit and loss account of any company, you can see a lot of basic accounting terms that will be entered there. Like in profit and loss account, we can see the salary account will be there, uh, and rent account will be there. A lot of different expenses will be mentioned. So all these terms that we use in the financial statement, or maybe we can say like when we are recording it, we use particular terms to record it, right? So all these terms are known as the बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस में, और उनको जाने बिना हम बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते प्रॉपरली। एंड इट एक्चुअली हेल्प्स नॉट ओनली द ओनर, इट हेल्प्स द पीपल हु आर इंटरेस्टेड into the business of the owner. Like there may be the people who want to invest the money into the owner's business. There will be the shareholder, they want to buy the shares of the company. So a lot of people who are actually interested to buy the shares or they want to invest in the business, they also should be knowing all these accounting terms. Not only the owner, all the people who are involved into the business process, they should know the accounting terms. Then only they can take a right decision कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लाइक अगर मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज लिखा है 5 लाख रुपए का, और मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज का, तो इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये कैसे पता चलेगा? बिकॉज दैट्स रीजन वी नीड टू नो all these basic accounting terms, then only we can take a right decision. So they are the basically the language of business and are used to communicate financial information to stakeholders such as investor, creditors and the regulator. So they are basically the language of business. Like language of business in the sense, like if I say assets, so there will be a lot of types of assets. I will be having cash, I will be having furniture in my business, I will be having land, I will be having AC, I will be having furniture, I will be having computers, I will be having a lot of different types of assets, but we don't actually mentions all these assets in a balance sheet. So what do we mention in the balance sheet? We mention as a assets. Like if we have a lot of varieties of assets, so instead of writing all these assets with particular name, we just mention assets.
बट अगर बिजनेस में लाइक दो तीन ही एसेट्स है तो इन दैट केस वी कैन एक्चुअली मेंशन ऑल दिस एसेट्स सेपरेटली। बट अगर हमारा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमारी बहुत सारी एसेट्स हैं तो वहाँ पे बेसिकली बैलेंस शीट में इतनी जगह नहीं होती है कि हम सारी चीज़ों को मेंशन करें, तो वहाँ पे सिंपली क्या मेंशन करेंगे, एसेट्स। सो दीज आर बेसिकली द अकाउंटिंग टर्म्स and that convey a particular meaning so that stakeholder can understand what does it mean by. Not only the stakeholder, a lot of people like investor also they can understand, and even the creditor and the regulator. And there is examples of basic accounting terms include like assets. You can see that in balance sheet, liabilities, equity, revenue, expenses, cash flow. Understanding these terms is important for individual and businesses to manage their finances effectively and make informed financial decisions. As I have already said that on the basis of if we don't have the knowledge of all these basic accounting terms, we cannot take the right decision. If we really want to take the right decision, we should be aware of all these basic accounting terms. Otherwise, it will be a very difficult for a person to understand these terms. You may not be able to take the right decision, right? So basic accounting terms is very important to understand, to exactly know what does it convey, what does it try to say in a particular financial statement. So there are a lot of basically accounting terms, like more than 200, maybe I can say more than 300 basic accounting terms. But as an owner or as an investor, there may be a lot of accounting terms that owners may not be aware of, but there are few like very basic accounting terms that all the owners or all the investor or the all the creditor or all the stakeholder should be aware of. Like asset is one of them, then the liabilities is one of them, equity, and then revenue क्या होता है, expenses क्या होता है, account payable क्या होता है, account receivable क्या होता है, cash flow, and then balance sheet क्या होती है, income is statement, general ledger, then chart of accounts, डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है. ट्रायल बैलेंस बेसिकली so it is a kind of statement which actually convey a kind of things that whatever general entries we have made it correctly. There are a lot of types of error also in trial balance that I'm not going to discuss now. but ट्रायल बैलेंस एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो भी होता है ना, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, अगर दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो भी है, हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं. ये अजम्पशन है बट करेक्ट नहीं है, इसमें भी गलतियां होती है, डेट वी विल डिस्कस लेटर. सो उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. फिर अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अक्रूवल अकाउंटिंग क्या कहती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है. सो दीज आर बेसिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म दैट the owner and the stakeholder must know about it. then फिजिकल ईयर क्या होता है, like जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो वो इनकम टैक्स वाले इसी ईयर को मांगते हैं, राइट. एंड देन कैलेंडर ईयर क्या होता है, बेसिकली इन केस ऑफ बिजनेस बेसिकली फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च को जो है बिजनेस कैलेंडर ईयर माना जाता है, राइट. एंड देन गैप क्या होता है, गैप बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सो वी have almost some 12 accounting concept and convention. So there are some principle which have been accepted universally. सो गैप के बारे में भी वी विल अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट इट. एंड देन IFRS क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. देन फिक्स एसेट्स क्या होती है, देन करेंट एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं. इंटेंजिबल एसेट बेसिकली वो एसेट्स होती है that we cannot see but it is of course the assets of the company, like the name and fame of the company, like goodwill of the company, trademark of the company. So intangible assets वो assets होती है. tangible asset जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिजनेस में AC हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं. So all these things we will discuss one by one
in the coming videos. And then inventory क्या होती है, this then cost of goods sold क्या होता है, COGS, and then gross profit क्या होता है, and net profit क्या होता है, difference क्या होता है gross profit में net profit में, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली एक ऐसा मतलब पॉइंट होता है जहाँ पे बिजनेस को ना तो लॉस होता है, ना तो लॉस होता है, ना तो प्रॉफिट होता है, लाइक योर कॉस्ट विल बी इक्वल टू योर अर्निंग। सो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बिजनेस को लॉस नहीं होता है, ना तो प्रॉफिट होता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। एंड देन प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड आफ्टर दैट various types of accounts like personal accounts, real account, and nominal account. All these things we will discuss in the coming videos. Then ledger क्या होते हैं, and journal क्या होता है, journal like as we do any kind of transaction, immediately we will record in the books of journal, journal, sorry. सो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाएगा उसको हम उसी डेट में रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो वो भी करेंगे। जर्नल क्या होता है, पोस्टिंग किसको बोलते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाएंगे उसको हम पोस्ट करेंगे, किस में पोस्ट करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। देन रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, देन फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी समझेंगे, नोट्स टू द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड लाइक फिनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसके नीचे हम कुछ नोट्स लिखते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स क्या होती है, बजट किसको बोलते हैं, वेरिएंस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिविडेंड क्या होता है, लाइक जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। एंड देन अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ईपीएस। एंड देन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होती है, गुडविल किसको बोलते हैं, गुडविल इज अ काइंड ऑफ एसेट्स लाइक इंटेंजिबल एसेट्स। एंड देन अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस भी समझेंगे। अभी मैं बस बेसिकली ये बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। अक्रूड रिवेन्यूज क्या होती है, कैपिटल किसको बोलते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसको कहते हैं। And then there are few more basic accounting terms that we should know, like net worth किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, sole proprietorship. So there are three types of accounting we have. One is financial accounting, one is managerial accounting, one is cost accounting. So normally we have three types, so financial, managerial, and cost accounting. Then sole proprietorship, this is basically the type of business. There are companies, there are partnership, there are sole proprietorship, right? And then partnership किसको कहते हैं, कॉर्पोरेशन किसको कहते हैं, लाइक कंपनीज एंड ऑल। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन असेट्स क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, लाइक व्हेन वी गिव money to the people who need the money to start the business, we will charge some kind of interest, like तो interest वही होता है बेसिकली। देन प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल किसको बोलते हैं, बुक वैल्यू क्या होती है, एंड देन मार्केट वैल्यू क्या होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी मैंने 2015 में, ठीक है, 5 लाख रुपए की, ठीक है, that will be the book value of that land in 2050. Even in 2023 the book value of that land will be 5 lakh rupees only, but market value might increase. So if the market value is currently 25 lakhs, so that is the difference. So we will always record all the transaction, uh, uh, all the asset at the book value in the बैलेंस शीट। सो बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, मार्केट वैल्यू किसको बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बेसिकली करेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स होती है। देन किधर गया, देन कैपिटल गेन्स क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है,
price to earnings क्या होता है. So all these things we will discuss one by one. Then price to book, and then double entry, debt to equity ratio, and after that current ratio क्या होता है, quick ratio, acid test ratio, and then working capital किसको बोलते हैं, operating margin, gross margin, account payable turnover ratio, account receivable turnover ratio, inventory turnover ratio, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पेरोल टैक्सेस किसको बोलते हैं, सेल्स टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है जिसको वैट बोलते हैं, अब तो जीएसटी भी आ गया, एक्साइज टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन किसको बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. सो ये सारी जितना भी मैंने कम से कम ऑलमोस्ट मैंने 100 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अभी मैंने लिस्ट आउट किया है, हमने डिस्कस नहीं किया है, बट वी विल डिस्कस all these basic accounting terms in the coming videos. So stay tuned. In this video only I have listed out all these things. I have explained why do we need to know about all these basic accounting concept, right? But in the coming videos we will learn about all this basic accounting concept in a detailed way. So thank you so much for watching the videos, and please stay tuned and please subscribe the channel so that whatever videos I will be uploading you can watch it. And if you really like the videos, if there is something that I should improve on it, you can always mention in the comment box and I will really work on that point, and your feedback is always going to help me. Thank you so much for watching. Please subscribe the channel if you like it, otherwise it is up to you. Thank you so much.